Okay, students, in the previous videos you have seen how to find partial differential equation, what is the meaning, what is its degree, what is its order, and what is its solution. So पूरा अगर स्टार्टिंग से वीडियो आप देख रहे होंगे, देखते आए होंगे, तो ये आपको मिलेगा कि फर्स्ट मॉड्यूल के जो भी कंटेंट आपको पढ़ने थे वो सारे वीडियोज में पढ़ाया जा चुके हैं पिछले प्रीवियस वीडियो. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट module 2, and this module I am going to discuss about the classification. Today I am going to start a new content, new topic, which is a classification of partial differential equation. Classification. Partial classification of partial differential equation. Okay, ऑफ ऑर्डर 2 ऐसे कह लीजिए, क्योंकि जो भी हम क्लासिफिकेशन, जो भी इस कंटेंट पे जो दूसरा मॉड्यूल है वो बेस्ड है एप्लीकेशन, application of partial differential equation. This is related to application. प्रीवियस वीडियोज में आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा. इस मॉड्यूल में आप इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे. पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासिफिकेशन को इंगित करेंगे. व्हाट इज द हाउ टू क्लासिफाई द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेदर it is a parabolic, whether it is elliptic, whether it is hyperbolic. So a differential equation, a partial differential equation is of this type: axy del 2z upon del x square plus bxy del 2z upon del x del y plus cxy del 2z upon del y square plus function of x y del z by del x del z by del y is equal to 0. Whenever a differential equation is given is of this form, so how to classify whether it is elliptic, hyperbolic as well as parabolic. Partial differential equation is this, can be classified into first parabolic, second elliptic, and third is hyperbolic. The given partial differential equation is parabolic only whenever their discriminant b square minus 4ac
becomes 0. As you know, in previous class you have learned about the discriminant. Discriminant मतलब b square minus 4ac is a discriminant. If this is 0, show the given partial differential equation of second order is of parabolic in nature. But whenever b square minus 4ac is less than 0, if the discriminant is less than 0, so now the given partial differential equation of second order is of elliptic in nature. But as the same process, whenever b square minus 4ac is greater than 0, show the given partial differential equation is of hyperbolic in nature. इस तरह से दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैटेगराइज करते हैं और ये एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े बड़े अच्छे कंपटीशनों में ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे आप? प्रोसीजर इज लाइक दिस हियर। फर्स्ट कंपेयर द गिवन इक्वेशन with this standard form axy del 2x upon del x square bxy del 2x z upon del x y square del x del y plus cxy del 2z upon del y square plus this. So compare the given equation with the coefficient of second order partial derivative with respect to x, which is a. Second order partial derivative differential coefficient of this be c and the coefficient of this be v, and after that find the discriminant b square minus 4ac and compare that b square minus 4ac with all these three results. You are able to classify the partial differential equation into 3 forms. So now I am going to solve some problem based upon this, some examples I am going to give. Example is here. Solve the partial differential equation 2 del 2 z upon 2. Example is classify the पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अपने पास जनरल इक्वेशन आप बना के ले सकते हैं, कोई भी एनी वन ले सकते हैं। 2 del 2z upon del x square प्लस 4 del 2z by del y square del x del y प्लस 2 del 2z upon del y square इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का जो कि होमोजीनियस है, ऐसा दिख रहा है आपको। कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ऐसा दिख रहा है आपको। इसे हमें क्लासिफाई करना है, इसका नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट अभी मैंने बताया कि फर्स्ट सॉल्यूशन इज बी लाइक दिस। सॉल्यूशन कैन बी इज ऑफ दिस टाइप। First write down given that 2 del 2z by del x square plus 4 del 2z by del x del y plus 2 del 2z by del y square equal to 0। ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसा दिया गया है। आपने पढ़ा है कंपेयर दिस इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। कंपेयर
the given equation with axy del 2 z upon del x2 plus bxy del 2 z upon del x del y plus cxy with this equation. This implies that a equal to 2, b equal to 4 and c equal to 2. From here, the coefficient of this be 2 and the coefficient of this be a, so now equal to t. The coefficient of this be 4, the coefficient of this be b, so b equal to 4. The coefficient of this be 2, the coefficient of this be c, so now c equal to 2. So the discriminant p square minus 4ac, find it. This is 4 b square, just see, b square, b is here 4, so 4 square minus 4 into ac, 2 into 2. So now this becomes 16 minus 16 equal to 0. This implies that b square minus 4ac becomes 0. This shows that the given partial differential equation is partial differential equation is in, यहाँ लिख देते हैं, this shows that the given partial differential equation is parabolic in nature. Parabolic in nature. Okay students, इस तरह से हम दिए गए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं. एक दो एग्जांपल और लेके आपको बताते हैं. ये पहला एग्जांपल रहा. दूसरा एग्जांपल, I am going to take the second example be del u by del t is equal to, classify example 2, classify del u by del t is equal to c square del 2u upon del x square. Del u by del t is equal to c square del 2u upon del x square. How to classify such type of equation? Just see here. First, यहाँ दिया गया है ऐसा. So now solution is of this type. Given that, first write given that del u by del t so now transpose this equation to this, this equation to this side. C square del 2u upon del x square plus del minus del u by
del t equal to 0. This is the first equation. This is the first equation. Okay. So now compare the given equation with the standard form a xy del 2z upon del x square plus b xy del 2z by del y square plus c xy del 2z by, sorry, this is xy del y square plus xy pq. Okay students, so now from here if we compare the given equation with this equation, so we will find that a equal to c square because of the second order derivative with respect to x be here and the coefficient of this be x c square, and second order derivative with respect to x be here and the coefficient of this be a. So now a equal to c square, b is equal to 0, c equal to 0, c equal to 0. So now and this equal to this, इसका कोई मतलब नहीं है. Then the discriminant b square minus 4ac, b square means 0 square minus 4 into a is a c square into c is 0. It means then again 0. So now b square minus 4ac is again 0. It means that अभी इस मॉड्यूल में ही आपको ये पढ़ाया जाएगा, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है. दिस इज अ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. हम इसी मॉड्यूल में इसका आपको डेरिवेशन बताएंगे और इसका सोल्यूशन बताएंगे कि हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं और उसका नेचर क्या होता है. ये सारी चीजें इस यूनिट के अंतर्गत आपको बताई जाएंगी. So now as you know this is a one dimensional and this is wave equation. Wave equation. So its nature is from here. This shows that its nature is a parabolic because of b square minus 4ac is 0. So now we can write the conclusion of this be, show the nature of the given partial differential equation partial differential equation B parabolic in nature. Okay students, so now I am going to discuss the third example also, how to classify other one. Classify example third be classify del 2u upon del x square you all are aware with this equation. This equation you have learned in previous class, BTech first year. This equation is a
Laplace equation. So what is its nature? How to find its nature? Just see, this is Laplace equation. You can write here Laplace equation. In case of two-dimensional heat flow, this equation is generated. In case of steady state condition, the two-dimensional heat equation becomes changed to this form, and it is known by the name Laplace equation. So what is its nature? Solution is like this. First write down given that del 2u upon del x square plus del 2u by compare again, write down, compare the given equation with axy del 2u upon del x square plus bxy del 2u upon del x del y plus cxy del 2u upon del y square is equal to 0. And from here, after comparing, you will find that the value of a is here 1, the value of b is 0, and the value of c is 1. Because of, as you know, from here you can say the coefficient of this be 1, the coefficient of this be 1, so now, and the coefficient of this be a, so now a is equal to 1. This term does not exist in equation 1, that does not belongs to here, and c xy, c is here, it means the coefficient of the second derivative with respect to y be c, and the coefficient of second derivative with respect to y be 1, so c equal to 1. Now the discriminant b square minus 4ac is a 0 because of 0 square minus 4 into 1 into 1. It means that minus 4. Here p square minus 4ac, this is negative less than 0. So this shows that the given partial differential equation is elliptic in nature. So from here, from this discussion, you can say that a second order partial differential equation, which is a Laplace equation, which is given here, is in elliptic in nature. So other problem can be solved in this way. One more example I am going to discuss with you. This is elliptic. Del 2uy del t square is equal to c square del 2u by del x square. Classify example 4. How to classify this? हम इसे क्लासीफाई कैसे करें? आप देख सकते हैं इसको, del 2u upon del t square which is equal to
c square u square upon x square. So now solution be like this. First write down given that del 2 uy minus c square this is 0. So first write down this given in this form, and it can be written like this del t square minus c square this is first equation. यहां से आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये पहला इक्वेशन ये दिया हुआ। फिर क्या करेंगे आप, कंपेयर विथ ax y del 2 u upon del x square plus bx y del 2 u by del x del y plus cx y del 2 u by del y square equal to 0। अब आप लिख सकते हैं यहां से, यहां आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में अंतर क्या है। इस इक्वेशन में जो u है वो डिपेंडेंट है, लेकिन जो u डिपेंड है वो t और x पे है। यहां इस इक्वेशन में u डिपेंडेंट है जो कि x और y पे डिपेंड है। मतलब दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ है, यहां x है यहां भी x है, यहां y है यहां t है। मतलब बिल्कुल एज इट इज आप कंपेयर कर सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ x डेरिवेटिव, द सेकेंड डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x be c square minus c square minus c square. Is it clear? And now there is no term belongs to here, so b becomes 0. There is no term. C compare this with this because of u is depend on x and t, and here u is depend on x and y, so y compare with t, so you will get c equal to 1. Now the discriminant b square minus 4ac, let us see, b square be 0, so 0 square plus minus 4 into a minus c square into 1. So this implies that it is 4c square. It means that b square minus 4ac is equal to c square. यहाँ c स्क्वायर लिया गया है और यहाँ भी c है, तो स्टूडेंट कृपया कंफ्यूज ना हो, ये इसे स्मॉल c लिख लें या a स्क्वायर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसे a स्क्वायर कंसीडर कर लें, ज़्यादा बेहतर है। सो नाउ दिस बी a स्क्वायर, show this be a square, so now this is a square, so this is also be a square, this is also be a square. अब आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये v स्क्वायर माइनस 4ac is 4a square. A square, a is a constant, so for every value of a, whether it may be negative or it may be positive, the square of any number be positive, must be positive. That's why the discriminant b square minus 4ac is always positive because of 4 into a square. a की प्रत्येक वैल्यू के लिए either it may be negative, either it may be positive, the value of a square is always positive. So that's why b square minus 4ac is always positive. This shows that the given equation is hyperbolic in nature. बच्चों आज आपने
क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा और हमने 3 से 4 एग्जांपल्स आपको दिया। पैराबोलिक कब होगा, इलिप्टिक कब होगा और हाइपरबोलिक कब होगा। अगले वीडियोज में हम आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, हम कैसे जनरेट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन इस कंटेंट में पढ़ना है, 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन पढ़ना है, 1 डायमेंशनल हीट फ्लो पढ़ना है, 2 डायमेंशनल हीट फ्लो पढ़ना है, उसको हम कैसे किसी दिए गए प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करते हैं आगे हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।